रोज की तरह हम शुरू करेंगे, समाधि का अभ्यास करेंगे थोड़ी देर। कलेक्ट अवर माइंड्स। जो भी हमारा आलंबन है उसको आधार बना के चित्त एकाग्र करने का प्रयास करते हैं।
आज हम वेदना खंड का 15वां सत्र कर रहे हैं। बीच में गैप भी रहा तो इसलिए मुझे लगता है कि एक समरी कर पाना, ताकि हम ओवरऑल पिक्चर हमारे सामने बनी रहे। आज सारे को समराइज करेंगे और फिर कल से संज्ञा खंड की चर्चा शुरू करेंगे। तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं? रिकॉल 5 खंडों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संकीर्तेन पंच उपादान खंडा दुखा, 5 खंडों के प्रति उपादान ही दुख का प्रिसाइज कारण है, भगवान समझाते हैं। और दुख के कारण है, या कह लीजिए या दुख ही है, बेसिकली कारण भी नहीं कहते, तो यही दुख है। और दुख को मुक्ति का मार्ग भगवान ने 4 आर्य सत्य में समझाया कि दुख को परिण्ययन, उसको समझना चाहिए। सफरिंग शुड बी अंडरस्टूड। सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज 5 खंडास। रूप खंड हमने चर्चा की करीब करीब 2 हफ्ते, 14 सेशंस में। और अब वेदना खंड के ऊपर चर्चा की। पिछले 15 सेशन हो रहे हैं आज। तो क्या है ये वेदना खंड, क्या समझना है उसका? पहले तो यही समझा कि वेदना है क्या। संक्षेप में ये कि जो भी अनुभव हमें होता है, कैसा लगता है, वेदना का जो उत्पत्ति है, सड़ायतन पच्चया फस, फस पच्चया वेदना। 6 इंद्रियों पे उनके विषयों का संपर्क होता है और उसके आधार पर वेदना जागती है। तो ये डेफिनेशन ही हमको बताती है कि वेदनाएं हर एक इंद्रिय पे अलग अलग होंगी। सामान्यतः हम वेदना को सुखद, दुखद या अदुखद असुखद मानते हैं। तो उसको भी जोड़े तो 6 into 3 18 टाइप्स ऑफ वेदना। तो उसको हमने समझा पहले 8 सत्य सुत्तम से, जहाँ पे भगवान ने 108 तरह की वेदनाओं की चर्चा की। तो उसको समझा है। वो बेसिकली यही है कि 6 इंद्रियां, 3 तरह की वेदनाएं 18, और फिर उनके 2 प्रकार, हर एक का नेखम सितन, गह सितन, तो 36। और उनको अगर भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान में जोड़ें तो 108 बनती है। वो एक एकेडमिक एक्सरसाइज लग सकती है। उसका उद्देश्य यही है कि हम समझें कि इतनी उसकी विशद रूप ये है। और फिर हमने हर एक इंद्रिय के ऊपर जो वेदना है उसको एक्चुअल अनुभव करके समझने का प्रयास किया था। चक्षु इंद्रिय के ऊपर हमने उसको वीडियोस के माध्यम से देखा। कई तरह के वीडियो आपको याद होंगे। शेर का वीडियो, जो मित्र के रूप में जिसको लोग, कुछ लोग देखते हैं। एक और शेर का वीडियो जो अटैक करता है एक लेडी को। तो किस तरह से वेदना जागती हैं और किस तरह से वो बदलती रहती है, वो हमने एक्चुअली वो वीडियोस के माध्यम से अनुभव करने का प्रयास किया। इसी तरह से दो पे सुनने के अंदर कई तरह के साउंड्स हमने सुने और देखा उसका हम पे किस प्रकार से उसका इफेक्ट होता है, किस तरह से वो कोई चीज़ें कुछ प्रिय लगती हैं, कुछ अप्रिय लगती हैं। जो मुझे प्रिय लग रही हैं वो दूसरे को अप्रिय लग सकती हैं। ये भी हमने चर्चा के दौरान पाया। और ये दो क्या कि चक्षु और श्रोत, ये 2 प्राइमरी मीन्स है इंफॉर्मेशन गैदरिंग के, संसार से हमारा इंटरेक्शन। तो फिर हमने उसके कॉम्बिनेशन को भी समझने का प्रयास किया। कई सारे वीडियोस देखे जो कि
विभिन्न प्रकार से हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, साउंड के माध्यम से, विजुअल्स के माध्यम से, और दोनों के एकीकृत होने के माध्यम से। किस तरह से हम देखते देखते एक ओपिनियन फॉर्म कर देते हैं, और वो आगे जैसे वो वीडियो बढ़ा तो उसका हमारा जो ओपिनियन था वो बिल्कुल डिफरेंट था, और जो उसमें दिखा रहे थे वो कुछ और ही हो रहा था। समझ में आता था कि हाँ, सब ये वेदना जो है अनित्य है, और इस अनित्य होने के कारण वो बेसिकली अनसेटिस्फैक्ट्री है। अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस के भी फॉर्म हमने समझे, और एक बड़ा छोटा सा सूत्र लेकिन बड़ा पावरफुल सूत्र, गठब्ब सूत्र पढ़ा हमने, जिसमें भगवान हमको कहते हैं, because there are three feelings: pleasant, painful, neither painful nor pleasant. And then comes the bombshell: pleasant feeling because should be seen as painful. Painful feeling should be seen as a dart. Neither painful nor pleasant feeling should be seen as impermanent. That's something to be really reflected upon, and it was quite interesting to see कि भगवान वो स्पष्ट शब्दों में बात कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्लेजेंट फीलिंग को प्लेजेंट मानने के कारण ही हमारा दुख बढ़ता ही चला जाता है। सुख की तलाश का कारण का आधार वही है कि हम प्रिय वेदना में वो अप्रिय नहीं मानते, जानते नहीं। वो कहते हैं अनित्य है, अनित्य है, दुख है, बट we don't see it in that sense. So that was the very important admonition from the Buddha. So what is the quality of Vedana जिससे कि हम कह सकते हैं कि हाँ ये satisfactory है? So we had listened to that small discourse by Venerable Sariputta. When nothing is felt, Vedana Nirodha is the really blissful. It seems so counterintuitive. आनंद उनसे पूछता है कि आप जो भिक्षु पूछते हैं कि आप तो कह रहे हैं कि वेदना निरोध हो गई, तो फिर उसमें ब्लिस कहाँ से आ गया? And he says that itself is the bliss actually, because Vedana is suffering. The fact that nothing is felt is precisely what is blissful about it. That's again something we need to deeply reflect upon throughout our life, throughout our practice. And this importance of seeing the pleasant as painful, Buddha says, when bhikkhu has seen pleasant feeling as painful feeling as a dart, and neither painful nor pleasant feeling is impermanent, then he is called a bhikkhu who sees rightly. So that is the right seeing. It is he who understands fully the feelings. Having fully understood feelings, he becomes taintless. He sees the Dhamma. At the body's breakup, he is established in Dhamma. It's just this much deep penetration into the nature of Vedana is sufficient to take us into the stream of liberation. And every Vedana is seen in that sense. Every sense door पे जो स्पर्श हो रहा है, उसके pleasant feeling को हम actually दुखद मान रहे हैं, दुखद की तरह जान रहे हैं. Then we talked about other sense doors.
body sense door, kaya sampasaya vedana, and which is the पंखे की हवा, common small things. नहाते टाइम पानी गिर रहा है शरीर पे, कुर्सी पे बैठे हैं तो वजन पड़ रहा है. And the most critical among them is when some person touches us. It is who is touching, where is touching, what is the intention, all that has tremendous impact on it. And we listen to the Buddha's teachings in the Anguttara Nikaya, those short teachings. Mendicants, I don't see a single touch that overpowers a man's mind like the touch of a woman. I don't see a single touch that overpowers a woman's mind like the touch of a man. And that's something we usually are not very mindful of. Of course, it all depends on with what intention, with what relationship, with what understanding the contact is happening. We give the example of a person embracing his daughter and a person embracing his fiancée, how much difference it makes. That is the power of sanya, perception. So we realize the importance of that. Then हमने अलग तरह की स्मेल्स लेके कुछ करके देखा था, उससे भी हाँ, स्मेल भी जो है एक वेदना जगाती है. पंजेंट स्मेल देखी, प्रिय स्मेल देखी, और फिर टेस्ट वाली भोजन करके थोड़ा सा देखा था. And we realized how various sense doors become operative while eating food. And then we took up the mind sense door. उसको हमने डिटेल में समझने का प्रयास किया, क्योंकि उसको देख पाना काफी मुश्किल होता है. तो डिफरेंट तरह के विचार प्रेजेंट, जो सलायतन विभंग सुत्तम जितने दिनों से चैंट कर रहे हैं, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, न्यूट्रल थॉट प्रोसेसेस which could be based on the form, sound, smell, touch, or they could be just based on thoughts primarily. And we saw various kinds of examples. किस तरह से विचारों के आधार पे जो वेदनाएं जाती है उनको हमको देखना चाहिए. और उस संदर्भ में हमने निखम्मसिता एंड गहसिता, दो तरह की अलग अलग एटीट्यूड जो हैं वेदना के प्रति, उनको समझने का काफी प्रयास किया. इस तरह से अनित्य बोध की प्रोग्रेसिव डीपनिंग से वी मूव फ्रॉम वन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ प्लेजेंट टू अनप्लेजेंट टू equanimity, a deep sense of equanimity. So in brief, in summary, this is what we did in all that. The important thing is that we realize that impingement on sense doors is simultaneous. हमने उसको एक एक करके देखा ताकि हमें सुविधा रहे उसको समझने की, लेकिन इम्पिंजमेंट साइमल्टेनियस होती है और इनमें से एक समय पे एक ही इम्पिंजमेंट डोमिनेट करेगी, फिर दूसरी जगह एक और एक और एक और. And if we are able to see it very clearly, then the chances of getting trapped in that are substantially reduced. और उसका जो सबसे सरल उपाय है वो है भोजन करने को जानना. वही हमने देखा था माइंडफुल ईटिंग का वीडियो. मुझे लगता है एक बार और उस माइंडफुल वीडियो ईटिंग के वीडियो को हम देख लें, और अब हम विद द मच बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदना वी ट्राई टू सी इट माइंडफुली कि अच्छा ये आँख पे देखिए, देखने से ऐसा हो रहा है, हाँ ये सूंघने के हो रहा है, ये इसके टच से हो रहा है, ये टेस्ट से हो रहा है, ये कंटेम्पलेशन से हो रहा है कि फूड को आदर करना चाहिए. एंड देन
we can separate out each of the sense doors and see that. Okay, तो मैं वो लिंक इसमें आपके चैट बॉक्स में डाल देता हूँ. I would request that you have a look at it again today and see how much differently you are able to see that. आपके चैट बॉक्स में आ गया होगा. I think you can see that. So we'll wait for 5 minutes, 7 minutes. I'll suggest you see it twice. First, as mindful as possible. Second time, stopping it in between and then seeing कि क्या असर पड़ रहा है different इंद्रियों के द्वारा. We'll wait for that time.
Good. So Dhammarama's video is stopped. Has he seen through that? तो हमने देखा होगा कि किस तरह से हर एक इंद्रिय के द्वार पे भोजन की जो प्रक्रिया है उसमें सारे इंद्रियों के द्वार जो है हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं और उस पर अगर हम सजग रहें तो वी कैन get a taste of the Vedana arising at each sense door. Then the final issue which we have been pointing out again and again. Sir, you can choose any sound is coming. Yeah. And so there is one more sound is coming. Somebody's video is on. And 2 cups of rice. So rice is Japanese rice. So I don't know. So maybe the host has to stop. Okay, thank you. Sorry, it must be mine. Thank you. Sorry. Okay. तो साथ साथ हमने बार बार उसको भी ध्यान दिलाया था जो जिस तरह से रूप का हमने 7 केसेस देखे थे उसी तरह से वेदना के भी 7 केसेस थे। क्या 7 केसेस हैं जो 4 आर्य सत्य का पैराडाइम है कि वी अंडरस्टैंड व्हाट इज वेदना, अंडरस्टैंड इट्स ओरिजिन, इट्स सेसेशन एंड द वे लीडिंग टू इट्स सेसेशन। तो ओरिजिन क्या है वेदना का? दी कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड सेंस, फसपचय वेदना। और उसका सेसेशन क्या होगा? कॉन्टैक्ट का सेसेशन। And the method would be that the ignorance which promotes that contact is done away with, which is the eightfold path. That is the general prescription for all sense, every khanda. Another important thing was understanding the gratification, the danger and the escape. ये हमने रूप में भी देखा था और इसमें भी। तो ग्रेटिफिकेशन क्या है? मतलब उसमें जो आस्वाद आता है, जो वेदना का जो स्वाद है वो क्या है? भी वेदना जो खास तौर पर जो प्रिय लगती है तो वो बहुत अच्छा लगता है। So the pleasure and happiness that arise from feeling, that is the gratification. जब वो उसमें आस्वादन है और वो हम सबका अनुभव है। इसलिए भगवान हमको कह रहे थे look at the pleasant feeling as painful, which is so counterintuitive. That's the reason. And then what is the danger in it or adinava in it? ये जो वेदना है ये इम्परमानेंट है, अनित्य है, दुख है, अनात्मा है, बदलती रहती है। अनिच्छा दुख विपरिणाम धम्मा, बार बार हमने ये सुना भगवान की वाणी। तो ये उसका बेसिक ड्रॉबैक है, because you can't rely on it for abiding satisfaction. So once we see this gratification and the danger involved in gratification, then the desire and greed for that vedana begins to drop off. और वो फिर हमने उसका खम्मसिता वेदना और गहसिता वेदना के माध्यम से उसको समझने की कोशिश की। इस तरह से हम गहराई से जब समझते हैं अनित्य बोध को, दुख बोध को, तो then it leads to a sense of equanimity, which ultimately even that equanimity drops off as we abide in the present, as abide in the sati and panya. जैसे मैंने निवेदन किया था, सती पठान में भी एग्जैक्टली सेम थिंग कही जाती है विभिन्न दूसरे शब्दों में। यहाँ पे कहा गया था अतमयता, मतलब कि आप उससे किसी भी चीज से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, संबद्धता नहीं रखेंगे, then we'll be free from the stranglehold of the खंडास। वही बात वहाँ पे भी कही जाती है। हर एक सत्र, हर एक सेक्शन के एंड में आपने याद होगा कहा जाता है अत्थिकायोति वापनस्य सती पच्च पठिता होती, अत्थि वेदनाति यापनस्य सती पच्च पठिता होती, अत्थि धम्माति यासनस्य सती पच्च पठिता, अत्थि चित्तंति या सती पट्टी। तो हर एक ऑब्जर्वेशन को ultimately we come to say, oh, this is just Vedana, nothing else. There's nothing, no big deed. And
सपन से सती पच्चु पठिता, सती इतनी प्रतिष्ठित हो गई कि यावदेव ज्ञानमत्ताय पटि सती मत्ताय, केवल ज्ञान और सती, ज्ञान अर्थात प्रज्ञा और सती रह गया, बाकी कुछ नहीं है. No mental factor is left other than these. So equanimity, non-equanimity, somanasya, domanasya, everything is gone because you're just abiding in the awareness of the experience. Sati है और प्रज्ञा है कि ये अनित्य है, दुख है, अनात्मा है, उसमें कोई सार नहीं है. And when we see that, what is the consequence of that? Satipatthana very clearly mentions यावदेव ज्ञानमत्ताय पटिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किंचि लोके उपादीयते. अनिश्चितो तो आश्रय रहित, निश्चय नहीं है, कोई निश्चय नहीं है, कोई आश्रय नहीं है उसका. इज फ्री फ्रॉम ऑल डिपेंडेंसेस. न च किंचि लोके उपादीयते. किसी भी लोक में, किसी भी इंद्रिय के द्वार पे, किसी भी संसार में, किसी भी चीज पे उपादान नहीं है. दुखे भिक्खु काये चित्ते धम्मे and so on. That's the practice, and exactly same thing in different words through Atamayata is mentioned in that Salayatana Vibhanga Sutta. And what is the result of all that? It leads to nibbida, it leads to disenchantment, it leads to weariness. क्या कि सब ऐसा ही है, बदलता ही रहता है, क्या रखा उसमें, क्यों मैं उसके पीछे पड़ा रहता हूँ कि ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए. वेदना तो बदलती रहती है. वो भगवान ने कहा है ना, वो पानी की, बारिश की बूंदें अगर पौंड में गिरती हैं तो बुलबुले जागते हैं और समाप्त हो जाते हैं. बिल्कुल वैसा ही तो है. अपने अनुभव को देख लिया, इतनी बार खुद करके देख लिया, खाना खा के देख लिया, स्मेल करके देख लिया, ना एक्सपीरियंस करके देख लिया. नहाते टाइम पानी गिर रहा है तो क्या हो रहा है, साबुन लगा रहे हैं, साबुन लगाते लगाते भी इतनी कई बार प्रिय समय वेदना होने लगती है शरीर पे कि यू गेट इनटू एक्सटैटिक फीलिंग्स. अरे यार, इतनी जरा सी बात पे हम इतना बहक जाते हैं कि टच पे इतना बहक जाते हैं कि जो which is so easily to stimulate just by you take a soap and rub on your body very gently and you'll get the same enormous pleasure in that. It depends on how you, what mind, where mind goes, it may lead to any kind of consequence. So we realize the futility of all that and it becomes a disillusion with it. And nibbida leads to viraga, nirodha. That's it. That leads to cessation from all experiences of that kind. So dispassion means leads to freedom. कोई चीज हमें, किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहा, किसी चीज के प्रति, ना ही उसके प्रति कोई विकर्षण है कि वो गंदा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए. You realize it is just like that. It is just arising, passing away. It's a phenomena. जैसे भगवान उदाहरण देते हैं वेदना का कि कभी गर्म हवा चल रही है, कभी ठंडी हवा चल रही है, कभी सुगंधित हवा चल रही है, कभी दुर्गंध आ रही है, आती है जाती है. Just let them go, let them pass by. Don't grab and hold on to it. Don't say this should change to this should change to that. ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए. So if that attitude is developed, then nibbidaya, viragaya, nirodhaya. That's it. And the Buddha says, one who practices like that, he is the one who is rightly practicing. So the words used are nibbidaya, viragaya, nirodhaya, patipanna, te supatipanna. So जो हम पढ़ते हैं supatipanno bhagavato savaka sango, this is what is supatipanno. Those who is practicing for nibbida, for viraga, for nirodha, they are practicing well. So let us all pray, seek the blessings of the triple gem so that we can also practice well. Thank you. You can take a few questions if there are any. मुझे पूछना था, शायद आपने इस चीज को एड्रेस भी किया है बट मेरे को अभी नहीं समझ में आया कि हम कह रहे हैं कि हमें उपेक्षा के भी बियॉन्ड जाना है. What does that mean, sir?
बियॉन्ड जाने का मतलब है दैट वी डोंट look at that as the culmination of our practice. It is just a mental factor which arises and passes away. See? So that also is a mental factor. It's not unconditioned. So in that sense, everything which is conditioned is dropped off as unreliable, not the basis for my happiness. So that also drops off naturally. पार जाना मतलब it naturally drops off because you are so much established in sati and panya that मेरे मन की स्थिति कैसी है, ऐसा है कि वैसा है, ये है कि वो है, it doesn't matter. You transcended all that. It doesn't mean that mind will become defiled and will become upset and angry. It doesn't mean that, but it means you're not really giving importance to those mental states at all. Yeah. तो इसमें क्या ये इम्प्लिसिट है कि जब उपेक्षा का भाव है तो व्यक्ति में उस समय उसके प्रति आत्म भाव है? हाँ, हो ही जाता है. आप we can verify that. लेकिन अगर हम अपनी साधना में देख सकते हैं, अपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन से पता चल जाता है कि अब तो मैं रियली एस्टैब्लिश हो गया हूँ. Now things don't disturb me. And then that kind of a thought works at a very subtle level in the mind. See so much, इतना सारा गड़बड़ हो रही है, ये हो गया, वो हो गया, तबाही मच गई, बीमार हो गया, ये हो गया, बच्चे आए थे विदेश से, उनसे मिल भी नहीं पाया, वो अलग रहे, मैं अलग रहा, ये वो, everything got disrupted, but still I'm okay. Oh, that's it. That's your understanding you're okay is that you're not okay. It's a very subtle kind of identity. Attamayata is tammayata, sambandhata. So that attamayata means non-identification. Sabbe dhamma nalam abnivesha. Every dhamma, which means everything, every mental state, every object, every thing in the world, अवनिवेश ना, कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई उसके प्रति मैं मेरे का भाव नहीं है. That's what, in one of the discourses he just tells the king of devas, वो कहते हैं मुझे brief teaching दे दो बस, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, अच्छा ये है तुम्हारे लिए teaching and now you practice it. Of course उसे क्या समझ आई क्या नहीं आई कुछ नहीं मालूम. Then Mahamogolana goes and stirs him up. And then he realized, हाँ वो मुझे तो मैंने तो ऐसे इग्नोर ही कर दिया वो क्या कह रहे थे. See the delusion which you can have. He's the king of devas, gets such a wonderful teaching and conveniently forgets it. So would that be the same thing as final giving up of conceit in some sense? Final? आपकी आवाज क्लियर नहीं, आप थोड़ा माइक से दूर होकर बोलेंगे तो शायद क्लियर हो जाएगा. जी. My question was, would that be the same thing as final eradication of conceit in some sense? Yeah, that's right. Yeah, it is the complete establishment in Dhamma, which means complete freedom, becoming a arhant experience. Complete sense of I is dropped. Thank you. Easy to understand when you're explaining, but very tough. Even coming to that stage is very tough. सर ऑल्सो हम लोग ऐसा भी कर लेते, जैसे कल सप्रेशन की बात हो रही थी या
कि आपने कहा था लाइक एन इनडिफरेंस जिसको हम एज समता मान लेते हैं, तो मुझे ऐसे ख्याल आ रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि लेट्स से कि मैं किसी घटना में मैं नॉन रिएक्टिव थी, तो फिर ये आता है हाँ मैं समता में थी, और फिर कई बार ये भी आता है कि अच्छा मैं समता में थी तो मैं का भाव जा रहा है, एंड आई ट्राई टू सप्रेस दैट। सर आप म्यूट पे हैं। It's a very good realization actually. See, unless we realize it, में पता ही नहीं चलेगा। तो ये रियलाइज कर पाना कि मैंने वो उसको I kind of, we create a protective armor around us, ताकि बाहर का वर्ल्ड हम पे इम्पिंज ही ना करे, वेदना ही ना हो भी रही है तो निगलेक्ट कर दें, ओवरलुक कर दें उसको, कहीं और अपना मन लगा दिया, कुछ और बात कर ली, किसी और तरह से डिस्ट्रैक्ट कर दिया. We're not actually, we are not in a position to handle the situation. So we try to kind of whitewash it somehow. So, and then we say, oh, it's okay. And then, I'm fine. Somebody says, where are you? As if you're lost. No, I'm fine. I know that the world is like that. It happens. Such things happen. People come and go, and yeah, it's okay. Yeah, so I can see, I feel sad that I have lost my 3 very dear relatives within a year. But yeah, that's it. That's the way life is. But internally, I'm really, really feeling upset. But I'm externally putting up a face. Yeah, it's okay. So that kind of seeing through. It may not happen at the same time actually, because the situation is so hot that you are not able to handle it. So you try to make your armor around you. But then when coming back at the airport, you realize, yeah, बहुत जाती हो गई. And this is exactly what I could see happen when I went to Jammu a few months back when my Bhavi died, the 3rd person to die within a year in the family. Quite a shock. But at that time, I could protect and create a veil. सर मैं एक और अपना इसमें उदाहरण देना चाहती हूँ जिसका मुझे रियलाइजेशन पिछले कुछ दिनों में हो रहा है, और कल जो डिस्कशन हो रही थी कि हम कैसे समता की वेल बना या के बेसिस पे एक वेल बना लेते हैं, कि मुझे ऐसे बहुत टाइम से मैं अपने आप को इस थॉट से एंटरटेन करती रही हूँ कि प्रोफेशनली आई एम नॉट लाइक कम्पेटिटिव या वांटिंग टू ग्रो एंड ऑल ऑफ दिस, मतलब मैं अपना बेयर मिनिमम कर लूँ कि गाड़ी भी चलती रहे, और ज़्यादा अटैचमेंट नहीं हो इन चीज़ों से. And then, recently some of my colleagues got promoted and I did not, or not to that extent. And I saw that there was so much of jealousy that came in. And I was surprised, but I also thought कि अच्छा ये है अंदर, और एक भाव है कि जब तक मैं एक्चुअली बिना रुकावट के मैं ग्रो कर रही थी, आई वुड ऑलवेज से मुझे फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, क्योंकि वो हो रहा था, बट जैसे ही वो नहीं हुआ फिर पता चला. That's very good. That's the way really the mind plays tricks on us. Yeah, we remain in a state of delusion. Yeah. Yeah. Good, very good. Sadhu. It is these realizations which really matter, because they open the way for us to work forward and then become more grounded in the reality. And they are the ones which open the path, make the path very clear, very clear. तो अपने अनुभव से देखा ना यार, ऐसे चलता है. हमको लगता है कि मेरे में जेलसी नहीं है, मुझको ये फीलिंग नहीं हो रही. Many times it happens in our careers that somebody gets something which we feel he doesn't deserve. And then, I mean, in some objective sense, it may be true, but obviously I'm feeling, I'm not feeling mudita at that moment. So then I had to sit
and work on my mind and transform the mind. Good, that's okay. Once you recognize it, once we recognize it, कि देखो jealousy जाग रही है, then and you see it and then you transform it, and then you go to the person and congratulate him formally and happily, then you're transforming your mind. That's how we work on the mind. That's what the very first teaching to the Rahula is there. So powerful, very simple teaching. Whenever you're about to think something or do something, reflect on it, whether it is for my good and for others' good, whether it's going to be harmful to me or harmful to others. Stop it. If you know it is harmful, don't do it. But if you have started it, then stop it wherever you are. If you already completed it, then go and seek forgiveness or go and do repentance with somebody and say, I committed a mistake. So that's a very fundamental teaching. और उसमें क्या कहते हैं भगवान? आज से पहले जितने भी लोगों ने चित्त शुद्ध किया उन्होंने इसी तरह से किया है. आज के बाद जो करेंगे वो भी ऐसे कर रहे हैं, और आज जो लोग चित्त शुद्ध कर रहे हैं वो भी ऐसे ही कर रहे हैं. So Rahula, do that. Reflect on your activities, your vocal actions, your physical actions, and your mental actions. So that's a very fundamental teaching. 7 साल के बच्चे को दी गई, तो हम उसी लेवल के प्रैक्टिस की जरूरत है really. From the point of view of introspection, from the point of view of looking within and seeing, हाँ देखो किस तरह से मन हमारा इस परिस्थिति को रेस्पॉन्ड कर रहा है. जितनी जितनी हमारी सती बढ़ती चली जाती है उतना उतना वो अपने आप मालूम पड़ने लगता है. सो टू से, यहाँ देखो मन में ऐसे ऐसे भाव जाग रहे हैं, एंड आई वाज अंडर द इल्यूजन, मेरे में तो है ही नहीं, कुछ ऐसी चीज ही नहीं है. Poonam has asked a question. Sutta says 3 kinds of mindfulness. They are the kinds of mindfulness needed for becoming an excellent teacher. So we are happy being a good student. So I thought we'll leave it at that. There's the Sutta me described it. You can refer to the Sutta. And I think I must also apologize for giving you mixing up the suttas. Yesterday in answer I said there are Vibhanga suttas are in Sanyutta Nikaya. No, they're not there. Actually they are in Madhyama Nikaya. मुझसे गलती हो गई, because वो विभंग संयुक्त नहीं है, विभंग वग्ग है. So this is the Vibhanga Vagga of Madhyama Nikaya. Madhyama Nikaya 131 to 142, 12 suttas. They give detailed exposition. Not all of them are titled Vibhanga. Many of them are titled Vibhanga. One of, in fact, the very first is that Vadekaratta Sutta, which we chant. But there is what we do is only the chanting. There is explanation of that given in that sutta. So those 12 suttas are supposed to be pretty deep suttas, expositions. And there are similar suttas that elsewhere also, as I said. तो जो अगला सूत्र कल से हम चैंट करेंगे वो अंगुत्तर निकाय से है. That also is a very elaborate sutta, but उसका हम एक मिनी स्कूल सेक्शन ले रहे सिर्फ उतना ही चैंट करेंगे, क्योंकि वो संज्ञा का चर्चा उसमें है. Apologies for that mix-up. So in hand over to Bhanteji for his comments and blessings, closing comments. This issue of nothing being felt and उस चीज को जो उस सूत्र में बताया जा रहा है as desirable, मुझे ये ख्याल आया, अब ये कुछ speculative है, तो you can certainly choose to, maybe we don't go into this, but क्योंकि ये सामने आया मैं इसको रख रहा हूँ, आप प्लीज बताइए इसको, how do we see it? आपने भी देखा होगा कई टीचर्स
ऐसा कहते हैं ना कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि एक अरहंत को कुछ महसूस नहीं होता है, इज नॉट लाइक अ वेजिटेबल एटसेट्रा, है ना। और फिर जिस तरीके से ये आपने सारिपुत वाले का जिक्र किया, एक्चुअली द स्टेट की कुछ नहीं फील हो रहा है उसको हमें नेगेटिवली देखने की जरूरत नहीं है, वो बात अब समझ आती है। तो वो जो दूसरा कंसेप्शन है कुछ जिस तरह से सिखाते हैं, तो उसको फिर हमें शायद थोड़ा हल्के से लेना चाहिए। वी शुड नॉट मे बी लिसन टू इट, वी शुड नॉट टेक इट टू डायरेक्टली, ऐसा ऐसे कहेंगे आप? And like I said, if you feel we don't need to go into it, that's also okay. No, I think it's important to clarify this point. What Honorable Sariputta is mentioning is the experience of Nibbana. That is the place when, avidya, nirtvava, shesha, viraga, nirodho. So avidya nirodh ho gaya, तो संखार निरोध हो गए, ज्ञान निरोध हो गया, नाम रूप निरोध हो गया, फस शरायतन निरोध हो गया, फस निरोध हो गया, वेदना निरोध हो गई, and that's it. The tana nirodha, and everything is ended. So that is the experience of Arhant Pal Samadhi, actually. That's what he's mentioning there when he's talking of nothing is felt. Because वो पूछते ना कि आप कह रहे हैं निब्बान में, there is, they use the word ना extinguishment, निब्बान है and there is nothing to be felt. वेदना निरोध हो गई तो बचा क्या फिर? So that is the point which is being made there. That is the experience of it. At this, when one is experiencing Arhant Pal Samadhi, then all the defilements have ceased, and there is that, at that moment, there is only the Anindasana Vijnana is operating, everything else has ceased. So that's what is being mentioned in that small sutta, which obviously is not the same thing as, but when we talk of कि हम सोचते हैं कि वेदना ना महसूस हो, तो we are talking of normal states of consciousness. That he is talking of states of consciousness of it at the moment of experiencing the Arhant Pal Samadhi. So there's a difference, of total difference about the context. उसको शायद context नहीं आया, तो इसलिए गलतफहमी होने की संभावना है. Right, I see. So क्योंकि कोई अरहंत भी हमेशा उस स्थिति में नहीं रहता है, इसीलिए that's the difference. That is the point being made there. वो जब उनसे कहते हैं कि when you are experiencing the cessation, then you say the cessation means there is no Vedana, then what are you calling bliss? That's what he is describing. The bliss of Nibbana is not a sensory experience of that kind. It's not an experience of a particular kind of Vedana. It's a totally different, transcendent experience. So अब जो मैं कह रहा हूँ ये this is clearly proliferative. So once more I'll invite you to basically not respond if you feel so. So अब इससे मुझे proliferation ये आता है कि फिर जिन systems में bliss की बात होती है धर साहब, तो फिर वो by corollary वो naturally फिर जिस तरीके से निर्वाण defined है उसकी बात नहीं कर रहे हैं फिर, ना? No, they're talking of bliss of 7th jhana, 8th jhana, 9th jhana, 6th jhana. The bliss arising from suppression of the defilements and abiding in shunya, abiding in neva sanyana sanyasa, those very subtle, rarefied domains of mind states. Her mind is totally absorbed in those pleasant states of experience, but they are not nibbanic experience. So those who are talking of ecstatic experiences in samadhi and things of that kind, or through
various other means of practice, chakra activation and so on, that's a totally different ball game. It is not nibbanic experience whatsoever. Thanks दर्शन. Different context. यहाँ तक तो मैं आपके साथ था जहाँ तक हमने ये कहा कि हमें फीलिंग्स को 3 लक्षणों के माध्यम से पेनिट्रेट करके ट्रांसेंड करना है, वहाँ तक तो ठीक है. सो आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड कि ये जो बाकी फ्रेमवर्क्स हैं हमारे पास, एक तो ग्रेटिफिकेशन, डेंजर और एस्केप का, और दूसरा नेचर, अराइजिंग, पासिंग अवे एंड वे ऑफ पाथ ऑफ पासिंग अवे, इनको हम कैसे सिचुएट करें? आई एम नॉट एबल टू सिचुएट देम कंसेप्चुअली. जैसा मैंने कहा 3 लक्षणों तक तो ठीक है. अब why are these 2 additional frameworks introduced, और इनको कहाँ और कैसे यूज करना है? The frameworks from practice point of view. Those are the frameworks which we see from the perspective of understanding that Vedana is impermanent. It is of the nature of dukkha. I mean, pleasant feeling we don't feel as dukkha. Buddha is telling us you should see it as dukkha. How will you see it as dukkha? When you see adinava in it. When you see gratification is there, you realize, oh, there's a danger in it. So then you see, yeah, it is really dukkha. So they are all supplementing that information. Especially the adinava, aswadan adinava and nisarana. They are actually complementing that statements from the Buddha that pleasant feeling is painful. It doesn't make sense normally. But it makes sense once we see it in that paradigm of adinava. Oh, this is danger actually. So the pleasure and gratification based on pleasant feelings is a tremendous danger. It means yet another lifestyle. Ek aur zindagi, ek aur life, ek aur life. They're getting it increasing my tanha again and again and again. So that is a very directly related to that. And when we talk of the arising and others, the understanding of anicca becomes strengthened only when we see arising of it and cessation of it. Otherwise, it is only a kind of superficial understanding. When we notice the arising of a phenomena, we see, oh, it was not there. Now it has arisen. Oh, it has ceased. It's not there now. So then it becomes clear, yeah, it is anicca. Otherwise, just by observing the way body sensation is changing, it is changing, and we make a think that we have got re-experience, is not really, that's not a deep experience. That's a superficial way of looking at it. So the whole idea of, that's why he says, the various views about Shashvatvad and the view about Uchchedvad, the materialistic view and the eternalistic view, those two are eliminated only when we do this kind of analysis. We see the arising of phenomena. He says, there's one sutta in which he says, Mahakachana ko shayad kehte hain. Kachana, if you see the arising of phenomena, the concept of annihilation is out. And if you see the cessation of phenomena, the concept of eternalism is out. And when you see it again and again, you become clear, yeah, things are just arising, passing away. You get established in Praticca Samutpad. So those two extremes are given up by seeing the arising and passing away of phenomena. So that's how they all gel together and make a dent in our strong kind of conditioning of taking things to be as per the appearances. I see. So अगर 3 लक्षणों को हमें एक्चुअली वास्तव में एक्सपीरियंस में लाना है तो ये हमें लगाना पड़ेगा, वरना वो superficial. It remains a superficial understanding. Only when we actually see, the smell arose and it contacted my nose and then smell is there. These days, no smell, no taste. I keep on eating just like a machine. कुछ खाने का स्वाद ही नहीं, मन ही नहीं करता खाने का. क्या हो गया भाई? ऐसा तो नहीं, मैडम को तो लग रहा है टेस्ट अच्छा खासा, मुझे क्यों नहीं लग रहा?
Yeah, the tongue has got lost its ability, hopefully temporarily. So you can easily see, अच्छा, so cessation ही हो गया भाई, ये तो खत्म ही हो गई, तो टेस्ट ही नहीं है खाने में. So you can see that, yeah, and you realize, oh God, how kind of evanescent is this whole experience business of taste, smell, and similarly for everything, because you realize ये तो खत्म हो रहा है यार, क्योंकि normally तो हमको पता ही नहीं चलता कि कभी कुछ टेस्ट खत्म भी हो सकता है क्या. We don't realize it. Similarly about smell, similarly about others, you know. And किसी में खत्म हो जाता है, किसी में मेरे केस में वो हाइटेंड रहती है इतनी ज्यादा, that becomes a big tragedy at home कि इनको स्मेल आ रही है, हमें तो आई नहीं. So you can see all the totally kind of uncontrolled nature of these phenomena. And when you just give up, my all attempts at getting this kind of experience, that kind of experience, futile. मैं अपने आप को परेशान ही कर रहा हूँ, अपना बोझ बना रहा हूँ मन में कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए. वो प्रकृति के नियमों के अनुसार, कंडीशनैलिटी के अनुसार बदलता ही रहता है. So that gets entrenched deeply when we see the arising and passing away of phenomena in that manner. तो वो जो अनित्य बोध है, दुख बोध है, अनात्म बोध है, वो इसी इन मैकेनिज्म से ही स्ट्रेंथन हुआ. That's why in Anatta Lakhana Sutta, Buddha again and again asks them, is this anicca or anicca? Is it dukkha or dukkha? What arises and passes away is dukkha. What arises and passes away is dukkha. Is it self? So he's asking them again and again and again. And then says, you should see it as ultimately, naitatmam naisohamasmi namaiso attati. That's where the anatta concept begins to gel slowly and slowly, and we then practice it again and again and again. तो फिर थोड़ा बहुत डेंट होता है, हमारी जो स्ट्रॉन्ग दिट्ठी बनी हुई है उसमें थोड़ा डेंट होने लगता है. So all these are kind of integral part of the practice, so as to strengthen the tilakhana. तो ऐसा समझे क्या कि ग्रेटिफिकेशन, डेंजर और एस्केप वाले को प्लेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है कि नॉट नेसेसरली? Yeah, that is primarily for pleasant. Okay, yeah. Let's mention what is the gratification. See, gratification is the pleasure based on the Vedana. Because वो जो भगवान की statement है ना, look at the pleasant feeling as painful. It looks funny, absolutely funny. क्या कह रहे हैं? Pleasant feeling as painful. ये भी कोई बात है? So that becomes evident when we see the gratification and see the danger. Oh, it's not just painful, it's dangerous. It's going to take me around the cycle of birth and death again and again and again. And this has been happening, Aneka Jati has been happening. As long as Tanha is residing in my mental stream, there's no escape from rebirth. सर पेनफुल फीलिंग में भी तो ग्रेटिफिकेशन होता है. It depends, but the sense in which that there it is mentioned is with respect to pleasant feeling. जहाँ पे भगवान ने जो उसमें सूत्र में describe किया ना, it is with respect to pleasant feeling. Of course, one can have a it's not gratification and painful feeling, but it is reaction to that. When you get angry, you get gratification. when there is a habit pattern, so you tend to enjoy that, feeling of having heightened energy level, or इस तरह से जो it's not painful उसके feeling. consequences होते हैं. It's not giving. आनंद आने लगता है. Not a painful feeling which is giving you joy. The heightened energy level is giving the joy. Yes. But जो human mind thinks that मैं गुस्सा करूंगा तो it will work. Yeah, that's मतलब, what that's why Buddha calls it, honey tipped poison. That's the example we should remember. Honey tipped poison. Yeah. शुरू में तो गुस्सा करने में बड़ा अच्छा लगता है ना. I put him in the place, उसको अपना I've set him right, आगे से नहीं करेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा.
it may just vanish. He may revolt with even greater force, and I may regret it for days and weeks. But उस समय एक sense of satisfaction है. That is typically the Buddha gives example of honey-tipped poison. Very beautiful example for us. Bhante ji, like जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर मतलब happiness या तब आएगा, then you have to use it. Is it that you just have to remember it? You just have to, बस वही है. I mean, आप अप्लाई करने की क्षमता ही नहीं रहती, 1 सेकंड में तो हो जाता है सब कुछ. Yeah, that's why sati means remembrance. हाँ, so you just have to, बस आपको ध्यान ही रखना है, और तो उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते. Yeah, if you're really mindful, before reaction you become mindful, no? Not after reaction. That's where the small, क्या कहना चाहिए, crevice is there. कि हम एक mental space create करते हैं अपने mind में. रिएक्टिविटी स्लो कर दी हमने. तुम कहा था ना, स्लो कर देती, रिएक्टिविटी को स्लो कर दिया, बार बार कर दिया. एंड देन when the reactivity is slowed, then that opening comes. अच्छा, ये अप्रिय वेदना है या ये प्रिय वेदना है, इसमें फंस मत जाना, ये अप्रिय है, अब इस पे गुस्सा करके अपना नुकसान मत करना. So then that possibility of panya arises, कि पन्या becoming available. अगर रिएक्टिविटी स्ट्रांग है तो फिर पन्या तो अराइज ही नहीं होती, उसको मौका ही नहीं मिलता अराइज होने का. हमारी पन्या तो है हमारे पास, भी ऑल नो, इतनी बार सुन लिया, क्रोध करने से परेशानी होती है, अनुभव करके देख लिया, फिर भी भूल जाते हैं. इसीलिए भूल जाते हैं क्योंकि सती स्ट्रांग नहीं है, रिएक्टिविटी स्ट्रांग है और सेंस रेस्ट्रेंट नहीं है. तो वो प्रैक्टिस है हमारी. नहीं तो सॉरी, मैं लेकिन हमारा जो हम सती को भी अगर हम समझना चाह रहे हैं तो हम ये सोचे कि ये होगा तो ऐसा करेंगे, लेकिन वो ये होता है और हम ऐसा नहीं करते ज्यादातर तो. लेकिन you know, to it is better to, what I'm trying to say, because Bhante ji is saying कि मैं apply करूं. apply कैसे कर सकते सर? apply की तो all we can do is just remember, in the sense आप अपना, जैसे आपने एक फॉर्मूला याद कर लिया, आपके सामने सम आएगा तो ऑटोमेटिकली you will apply that. It is not automatic. That is the tragedy. सर फिर कैसे, फिर It is the practice, repeated practice. That's what he means by applying. Repeated practice of that. Remembering to do it and forgetting it. Again, trying, again. When you do it again and again and again, then it becomes a habit. It's a question of creating a new habit. We can't just helplessly give up. कि यार ये होता ही नहीं है तो. No, helplessly तो कोई give up नहीं करनी है. You have to continue to practice again and again and again. And we'll fail. There's no doubt. We'll fail. But then, okay, we'll be more mindful next time, And a time will come and we'll be able to observe and that will not react. Oh, yes. So that is the victory which we have got, a small victory we have got. We have experienced the arising of phenomena, arising of, say, anger, and didn't react to it and just saw it. Or even better, we saw the arising of unpleasant feeling and didn't allow it to convert into anger. That's, of course, a big job if we have really done. So that's how we gradually practice slowly and slowly. Firstly, we practice at the level of observing the reaction and not allowing the reaction to come into speech and action. Slowly we become careful, and then we become able to observe the feeling and not allowing the reaction to arise at all, which obviously is a very big thing. So we practice it again and again and again. So जितना हमारी सती पुष्ट होगी, जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी, उतना ये संभव होगा. Right, thank you.
Thank you, sir. सर एक और सवाल है मेरा, दिस इज जो भंते जी के साथ जो डिस्कशन हो रही थी, मुझे पूछना था कि जब प्लेजेंट वेदना जागती है और हम उसके जागने के साथ साथ कभी कभी क्रेविंग एक्सपीरियंस करते हैं कि टू फॉर दैट एक्सपीरियंस टू एंड्योर, तो उस क्रेविंग में एक बेचैनी होती है. So far I was working or looking at Sukhad Vedana whenever I could as Dukha by means of that craving. Now you know what, अभी जो आपने explanation दिया उससे मेरी वो वाली समझ थोड़ी सी हिली है, and I just want to understand कि जो आपने बात कही कि इसको हम आदि न डेंजर की तरह देखें, and what I just described as the way I am practicing, if Yeah. you can help me synchronize the two. If you see craving as danger, it is same thing. So Okay. there's no difference really. Just Okay. a change of words. But even better would be seeing the feeling as rather than allowing it to go to craving. Mm-hmm. We come a step early. जी. Come a step early and see the feeling itself as danger. Why? Because craving arise हो जाएगी भाई अगर देखा नहीं तो. So that kind of a ability, quite tough, of course. It's not happens very easy to see Vedana, and especially when it is pleasant, and then not allow the reactivity to arise. But by practice again and again, and with deep understanding of its nature of danger, then it becomes possible. जी, thank you. Thank you. नमस्कार सर। हाँ जी कहिए डॉक्टर साहब। ये जो षड आयतन में जो वेदना है, ये तो इसमें मैं एक हफ्ते पहले था जब आप बीमार होने से पहले मैंने पूछा था शब्द के बारे में, वो तो क्लियर हो गया कि जैसे हम डॉक्टर हैं, हम सर्जरी कर रहे हैं अगर लिविंग बीइंग की, तो लेप्रोटमी करते हैं, पेट ओपन करते हैं, एब्डोमेन, तो स्मेल आती गंदी, और अगर हम पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं तो और गंदी आती है, और अगर पोस्टमार्टम में मैगट पड़े हुए हैं, डेड बॉडी 7 दिन पुरानी है, 10 दिन पुरानी है, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव आती है, तो उसमें ये बात तो समझ आती है, अनिच्छ अनित्य वो चीजों तो समझ में आती है, अनिच्छ दुख अनत्ता वो तो समझ में आती है, और अच्छे से समझ में आती है हमारे प्रोफेशन में, लेकिन इक्वेनिमिटी कैसे मेंटेन करें? that is a matter of really deep practice. भगवान ने क्या उसमें कहा, knowing that it is impermanent, वो चीज तो समझ में आती है, now that अनिच्छ impermanence है, अनत्य है, वो सब चीज और अच्छे से समझ में आती है। वो बुद्धि के स्तर पे समझ आए ना, वो इतनी गहराई से समझ में आ जाए, इसीलिए उसके 3 स्टेज बताए भगवान ने। पहला स्टेज ये कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्परमेंस लीड्स टू सोमनसिंग एंड मेंटल हैप्पीनेस, and then means we have dropped therefore the attachment to pleasant feelings of the worldly sense. तो जो worldly सुख भोग की तृष्णा है वो ड्रॉप हो गई है. Then we experience happiness of a different kind. Then we come to the second phase where even deepening of the anicca, dukkha, anatta leads to a sense of dissatisfaction with the current state of affairs. That I am still, of course, मेरी सांसारिक सुख की तृष्णाएं कम हो चुकी हैं काफी, लेकिन अलौकिक सुख भी तो नहीं मिला ना, तो वो एक मन में भाव जागता है जो हमको आगे पुश करता है काम करने के लिए, और ये दोनों पुश होने के बाद जाके वो डेवलप होगा कि हाँ अब तो देख लिया यार, अनप्लेजेंट फीलिंग भी है, ठीक है वो भी आएगी और बदल गई, क्योंकि जो प्लेजेंट फीलिंग थी वो बदल के अनप्लेजेंट में हो गई, तो अनप्लेजेंट भी बदल जाएगी. दैट अंडरस्टैंडिंग भी बिकम सो डीप, then these things don't matter, then they don't really influence us so strongly. Now that is a matter of deeper and deeper understanding. So जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी ज्यादा, उतनी हमारी इक्वानिमिटी पुष्ट हो जाएगी. That is the natural consequence of understanding rather than externally imposed equanimity.
ऑल्फैक्शन पर और वर्क करने की जरूरत है, मतलब ये हुआ हाँ। ऑल्फैक्शन पर और थोड़ा वर्क करने का। या खासतौर पे Thank you. स्मेल के ऊपर या दूसरी चीजों पे भी, टेस्ट पे, देयर सो मेनी at every some depending on what one's exposure is, some sense door can be very strongly influencing us. जैसे आपने बताया कि आपके केस में स्मेल वाले, especially if one is doing a forensic medicine, then the smell is a big issue there, obviously. Even sight is a big issue because you see decomposed bodies, and then that becomes a very challenging practice. But then that is the what practice we have in our Satipatthana Sutta.